Hello and welcome everyone. So students, this is a very important session. Basically, it will deal with respect to the recently happened paper of our main examination, UPSC 2022. So in this particular lecture, we'll be discussing about the economic questions and how to approach those questions and some brief detail about those questions we'll be discussing in the particular discussion. So as we move forward, I'll share the slides with you and then we'll start our discussion according to the slides. So basically it is 2022's पेपर डिस्कशन इकोनॉमी जो हमारे जीएस 3 का पार्ट है. एक बार इसको डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले बिफोर गेटिंग into the nitty-gritty of the paper itself, let me tell you what should be the approach and what has been the themes of the question paper in the recent past. So सबसे पहला काम, look at the trends. बेसिकली ट्रेंड्स की अगर बात करते हैं तो जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी का एक मेजर पोर्शन आपका आता है and that portion is catering about roughly 100 marks, so which is approximately 40% of entire paper. अगर आप छोटा सा इकोनॉमी का सिलेबस तैयार करते हैं, यू आर कंफर्टेबल विद दैट सिलेबस, तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आप साथ के साथ इतने मार्क्स को आसानी से केटर कर सकें. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अप्रोच कैसी होनी चाहिए. अप्रोच must be like this because this paper is important. So in this scenario, the approach must be like you must be thorough with the syllabus. That is number one point. Plus, you must be comfortable with the current affairs. Apart from this, there are certain contemporary issues. Contemporary issues are the issues which are in the news for past 20 to 30 years. So if you date back from today, अगर आप पिछले 20-30 साल में उठाकर देखेंगे, these are the issues which are common and they are repeated in the news. For example, food security is a contemporary theme. Similarly, jobless growth is a contemporary theme. अगर आपको सिलेबस पता है, करंट अफेयर्स आप उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं. कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो नॉर्मली हम लोग इंक्लूड कर देते हैं अपने पढ़ाई के पैटर्न में, देन वी आर कंफर्टेबल टू अडैप्ट द आइडिया दैट कंटेम्प्रेरी इश्यूज के साथ हम अपने पेपर को अच्छे से डिलीनिएट कर सकते हैं, डिलीनिएट कर सकते हैं. तो आई जस्ट हाईलाइट सम ऑफ द थिंग्स हियर इन द syllabus which will be which are essential for you. For example, first is the topic related to planning, growth, development, employment. So basic economic, core economic ideas are here. Sustainable development and inclusive growth basically is in the second part. Government budgeting, that is public finance, is in this part. Then agriculture related portion related to crops, e-technology for the farmers, marketing of the agriculture and other related issues are there in this particular unit. Then we have got issues related to subsidies, MSP and public distribution system. These are categorically given important points जिनके ऊपर आपको सवाल डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं as it is in the question paper. And इस साल भी आपने देखा कि सिर्फ सिलेबस की थीम को उठाकर they have asked the question directly. Hardly there were a few questions जो कि इससे डिविएट होते नजर आए थे. Food processing, basically this industry and supply chain management, जो important topic है. Similarly, land reforms पिछले साल भी UPSC ने पूछा था, and land reform is another one of the area. Similarly, liberalization and the recent changes in the policy, industrial policy is the part. Then we talk about infrastructure and investment model. These are the major themes जो आपके syllabus में UPSC GS paper के syllabus में दे रखी है categorically. अगर आप इन themes के साथ comfortable हैं, then it will become easy for you to attempt any such question paper. And we move forward कि आप question paper तो attempt करोगे, but there are several tools जो आप associate कर सकते हो. तो उनमें से एक ऐसा tool है which is a little common. उस common tool को हम inclusive growth के साथ भी relate कर सकते हैं. And further, we can also integrate that common tool with almost every question's conclusion, and that tool is the sustainable development goals. Basically, these are the targets for sustainable development. जैसे it will include no poverty, zero hunger. Goal 3 is good health. Goal 4 is quality education, gender equality. Then 6th is clean water and sanitation. 7th is affordable and clean energy. Then 8th is decent work. 9th is industrial segment. 10th is about inequality, then sustainable cities. So if you see all the 17 goals, they are somehow related with the socio-economic development. And economy in GS paper 3 is nothing, is about this only.
So it is very easy for us to integrate sustainable development goal either in the main body, maybe in the introduction, or maybe in the conclusion. So now if you have understood that what are the elements that you can incorporate in your answer, so I'm just bringing in the general discussion of the questions because I want to keep the discussion as crisp and important for all of us. So moving ahead, let's try to see what is the question. So the question is about the public-private partnership. Let me highlight the keywords. What are the major keywords? The number one keyword is why. This is the commanding word in the question. That is, keyword is public-private partnership is required in infrastructure projects. Number one. Another commanding word is examine. Examine what? PPP model. Again, the same thing in the redevelopment of railway stations in India. So this is the particular question. Question is basically simple on theme. और ये क्वेश्चन बार बार न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलता है that there have been several exercises जहाँ पर PPP मॉडल का यूज करके स्टेशन का रीडेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है इंडिया के केस में. So let's discuss these pointers. So in the beginning we'll talk about what is PPP. So basically PPP is a long-term contract based. PPP क्या है? PPP is a long-term contract between the government and private player for a specific project. तो एक प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म एन एसोसिएशन और उसके बेसिस पर वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं. दिस इज द आइडिया ऑफ पीपीपी. ये आइडिया कब से इवॉल्व हुआ इंडिया में? इंडिया में दिस आइडिया गेन करेंसी सिंस 1991 रिफॉर्म्स. सो 1991 के रिफॉर्म के बाद क्या हुआ था? स्टेट ने रोल बैक करना शुरू कर एंड दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन पीपीपी मॉडल गेन द ट्रैक्शन. व्हाई इट गेन द ट्रैक्शन? बिकॉज गवर्नमेंट के पास हमेशा एक चीज का क्रंच होता है, दैट इज द क्रंच ऑफ फाइनेंसेस. So because of financial crunch, government has the possibility of fiscal deficit. This FD is fiscal deficit. So government has the financial crunch, which is seen in the form of fiscal deficit. For the private players do have the technical expertise. So government lacks in technical expertise. At the same time, government do not have the fiscal financial position, strong financial position. So in this scenario, what happens? Private players provide these two factors. Along with this, what private players need? Private players need a guarantee plus a viability. Both of this guarantee and viability is provided by the government to private players. For example, land acquisition for a private sector project will be comparatively difficult, whereas if government is involved in the construction of a highway and it is on the basis of PPP, so private party will be getting the acquisition of that particular land or linear project will be comparatively very easier. तो प्राइवेट प्लेयर के लिए भी आसान हो जाता है इसे प्रोजेक्ट करना और गवर्नमेंट के लिए भी आसान हो जाता है. जहाँ पर वायबिलिटी मतलब उनको प्रॉफिट होने की ज्यादा गुंजाइश नहीं होती, तो वहां पर क्या गवर्नमेंट कम्स इनटू द एक्शन और कुछ जगह पर गवर्नमेंट कुछ फंड भी पूल इन कर देती है ताकि प्रोजेक्ट वायबल बन सके. तो ऐसा ही सेम प्रोजेक्ट अब तक आपने देखा रेल रोड अदर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलता है. तो दिस वाज अबाउट पीपीपी. And why PPP was required, we have dealt with these particular aspects. Now in the main body itself, after introducing and the why concept, we'll talk about the merits. In case of merits, when we talk about the redevelopment of projects, so here the question is examine. So whenever the keyword is examine, you have to look into both merits and demerits, both merits and demerits. Then you have to analyze what are the problems and at the same time try to give the solution as well. And remember, the answer is to be written in 150 words and 10 marker question. So roughly 10 to 12 different points you can generate. However, there is no limit to have the points. So 10 to 12 points are the decent number of points which you can generate here. It does not mean all the points should be very different, but the 10 to 12 point means point and sub point, all the count should include and combine from 10 to 12 points at least. In case of merits, the clean spaces will be provided. If PPP private party आती है तो private player के आने से the clean spaces, clean platforms can be maintained. उनकी maintenance plus basic facilities will be improved. क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स का पैसा वहां लगेगा जो कि गवर्नमेंट के पास नॉर्मली फाइनेंशियल क्रंच रहता है. गवर्नमेंट की मेंटेनेंस भी थोड़ी कंपैरेटिवली स्लो होती है, फिर प्राइवेट प्लेयर्स में थोड़ी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है.
in the working condition. So basic facilities like better improved toilets and the lounge facility will be there. Wi-Fi and connectivity will be higher. Connectivity with respect to the energy, connectivity with respect to transportation, both will be improved in case of the PPP model of railway station. So further, इसके बारे में we can identify the concept of airports model. In India, PPP model, basically public-private partnership is very active in case of the airports also. So we can see that the airports are performing way better in case of providing amenities when we compare them with respect to the railway stations. The railway stations are getting clean, they are getting better, but not comparable with respect to the railway station. Further, the revenue will be more when PPP and the facilities will be improved. And what is going to happen? Revenue will be generated more. And in PPP model, there is the concept of risk and revenue sharing. Risk and revenue both is generally shared by both the parties, private as well as the government party. So normally government has a low operating ratio. So government cannot generate much of the revenue due to its social welfare bent. But private, due to efficiency, they can reduce the cost in the operations. So basically, more cost will be saved. Some of the recent examples include Habibganj and the Rani Kalavati station, जहाँ पर आपके PPP मॉडल से रेलवे स्टेशंस का redevelopment चल रहा है. So this increased revenue will also be approved with the help of development of more jobs, but these jobs will be in the area of private sector. So private sectors which are operating there in the infrastructural development at railway station, वो ज़्यादा जॉब को क्रिएट करने में हेल्प करेंगे. Further moving ahead, we can see, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एग्जामिन करना था, तो इसका स्ट्रक्चर का एक पार्ट होगा, दैट इज डीमेरिट्स. इन केस ऑफ डीमेरिट्स, कॉस्ट ऑफ सर्विस डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि जब भी कोई प्राइवेट प्लेयर आता है तो वहां पर सर्विस की कॉस्ट बाय डिफॉल्ट इंक्रीज होगी. दे आर प्रोवाइडिंग मोर बेटर एफिशिएंट सर्विसेज, टेक्निकली देयर विल बी मोर कॉस्ट. सो दिस मेक्स प्रोजेक्ट्स लेस impactful for poor people. So poor people are going to suffer in this scenario. Further, not all the projects are feasible. So if we were to redevelop railway stations, so where we can redevelop the railway stations? At all the locations? No, that is not the case, because last mile connectivity will be missing here. So only those railway stations where there is economic feasibility, economic returns are high. So where economic returns are high, only those railway stations will be considered. By whom? By the private players. And then there is the decrease in the government job. This is another scenario. In the end, we can conclude by talking about the merits as well as the solution. So solution in which we can write about the Vijay Kelkar committee report about the PPP, how PPP can be made more effective. Even if you do not remember any committee's report, you can try to connect with the sustainable development goal here and try to give an optimistic conclusion to your answer. For example, here we can talk about sustainable development goal. Number one, decent work, plus we can talk about the sustainable cities and communities can be added here. Further, responsible industry innovation infrastructure goal number 9 can also be added in this answer towards the conclusion. That is how you are going to write this answer. 10 marks, 150 words. Moving ahead to the next question. The next question, first step is to identify the keywords and the word which is directing what to do in the question. In this particular, basically it is simply asking, is inclusive growth under market is possible in the market economy? Number one. Number two, it is also talking about the significance of financial inclusion. So now let's identify the keywords. Keywords would include number one, inclusive growth. Number two, market economy. Number three, financial inclusion and economic growth. And ultimately it has to be done in the 150 words. So 150 words, obviously there will be the same structure. One is the introduction, then there is main body to the answer, and then the conclusion. So let's discuss one by one.
Alright, so in the introduction, you can start with the definition of inclusive growth. So let me tell you what is inclusive growth. Inclusive growth का मतलब है a growth which is distributed among all. So it creates opportunity for all. So inclusive growth is the growth which is providing opportunity for all, each and every individual. Equitable growth for all by providing opportunities to all. So this is inclusive growth. Now there is the question, what is the market economy? This is very important because we have also discussed in detail about the capitalism and socialism. So market economy is very important topic to be discussed here. Market economy is basically something which is related to the capitalistic setup of the society. What does it mean? It simply means that a society or economic system which is running because of the market forces. What are market forces? Market forces include demand and supply. So basically nobody is there to govern in the market economy. In socialistic economy, government has a role to play, but in market economy, there is no role to be played by the government. So basically demand and supply will be deciding factor. Poor people and welfare are not taken care in the market economy. That is a point to be considered here. Another thing, if you want to consider that the role of state is very minimal. So minimum government and government as a facilitator is considered important. Private sector grows, but India's experience with market economy is jobless growth. So Indian experience with the market economy is jobless growth. So ultimately, what is happening in this scenario? Ultimately, it can be suggested that inclusive growth is something which is opposite to the market economy. So you would write about these two aspects in the first half. Now you have to make sure that this part of your answer must be provided with almost equal weightage. So you can give roughly 40 to 45% to this part, and remaining second part is about 55% of the answers weightage will be given to the second part. So let's see what we can discuss in the main body. However, some of this discussion may trickle down to the main body itself. That is comfortable. But in the introduction, you have to start with the idea what are these two things and how these two things are distinct. Then you will bring up, okay, no, these are achievable even in the case of market economy. What are achievable? The concept of inclusive growth. So inclusive growth means growth for all, which will definitely require the redistribution of income. So having discussed the concept and features of inclusive growth and market economy, we can say that inclusive growth can be achieved because taxes, when they are collected, they need to be redistributed among the people through the welfare schemes. That is a part of inclusive growth. But where from we can have the higher tax collection? So higher tax collection can be seen by the help of higher economic growth. So if growth is high, it means we can have the high tax collection, and this is the idea of tax buoyancy. And if there is high growth, that means there will be more taxes with the government. So even if wealth is accumulated with rich people, but government is having more money to spend over the people in the form of welfare scheme, so inclusive growth can be ensured. Further, there is a trickle-down effect. So trickle-down effect means if we provide growth, economic growth, I'm writing EG stands for economic growth at one point. So after a point, this growth trickles down to the adjacent areas. So for example, if an industry comes into a location, so there is this industry. Now what has happened? This can provide jobs to all the people or most of the people which are in the area. So along with one single industry, let's say one automobile factory set up at an individual place. So not only that factory is providing the direct employment. So factory is providing direct facility. Direct facility means employment plus sale and purchase. But apart from the direct, there are indirect benefits also, which would result in the form of ancillary activities. So हो सकता है कि वहां पर फैक्ट्री के आसपास छोटी छोटी दुकानें शुरू हो जाए, तो वहां पर एक रेजिडेंशियल कॉलोनी बन जाए, तो स्कूल्स आने लगे, तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो, माइग्रेशन हो, वहां पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हो जाए. So ultimately
all these factors जो एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से स्टार्ट होते हैं, they are causing greater growth in the system. So this is known as the trickle down effect. An economic survey is quoting that China के केस में trickle down effect बहुत पॉजिटिव रहा है, इंडिया के केस में लगभग मिक्स्ड इफेक्ट रहा है. Further, another point to be discussed here, जब आप ट्रिकल डाउन की बात करेंगे तो एक दूसरा पॉइंट है सेन भगवती डिबेट का. So सेन भगवती डिबेट, for this debate I'll just take you to the whiteboard for a bit. So Amartya Sen is basically talking about development first, and then it will lead towards the economic growth, whereas Bhagwati is talking about economic growth first and then development. So these are the two debates, but in the difficult situation, what becomes important? Growth becomes important. And however, in the real situation, both growth plus development, they are required. For example, जब कोविड का केस था तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ने कैसे हैंडल करा इन सिचुएशन को? गवर्नमेंट इंडक्टेड बोथ द एस्पेक्ट्स, ग्रोथ एज वेल एज development. Growth in the form of providing tax benefits to whom? To industries. Further, government provided money in the infra sector. So ultimately what happened? With more money with people, what happened? Demand increased. With increase in demand, producers को क्या मिलता है? Motivation मिलता है. So production increases with increase in demand. Along with this, government also focused on the development aspect. For example, online education, online medicine. Further, government developed vaccine. Not only helped in development of the vaccine, but also manufacturing of the vaccine plus free application of the vaccine. Apart from this, schemes like one nation, one ration card for food security of all the people. Apart from that, state governments has also undertaken many initiatives which include the distribution of pension to different people. तो इस बात से एक बात समझ में आती है कि आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ मार्केट इकोनॉमी में भी हो सकती है as long as there is a balance between them. So on face value, they look as if they are opposite to each other, but in reality, they are not that contradictory to each other if the welfare notion is applied to them. All right. So now let's see. Moving ahead to the second part of the question, जिसको हमें 55% के आसपास का weightage provide करना, that is the aspect of financial inclusion. Financial inclusion for economic growth. Now, this is not a very difficult aspect to be considered. Financial inclusion means providing basic facilities, basic banking facilities to all. So we have seen different schemes by the government, which includes Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, direct benefit transfer, financial inclusion, literacy. Further, government has a mission or strategy also. So financial inclusion strategy 2019 to 24, 5 साल की strategy भी है. Plus there are as many schemes. जो भी schemes आपके बैंकिंग सेक्टर को आगे बढ़ाते हैं, लोगों के पास तक लेके जाते हैं, those are the part of financial inclusion. So financial inclusion से economic growth कैसे improve होगी? Let's see. सेविंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इफ देयर इज सेविंग्स को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? वी कैन कन्वर्ट सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट. हाउ सेविंग्स कैन बी इन्वेस्टेड, कैन बी कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट. आप अपने प्राइवेट लेवल पर भी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो. इसके अलावा भी गवर्नमेंट क्या करती है? टाइम टू टाइम बॉन्ड्स रिलीज करती है. कॉमन लोग उस बॉन्ड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं. इन रिटर्न क्या होता है? गवर्नमेंट उन्हें ज्यादा पैसा वापस करती है आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम. सो सेविंग्स विल हेल्प इन मोबिलाइजिंग द फंड्स इन द इकोनॉमी. नंबर 2, लोन. अगर किसी को जरूरत है लोन की और लोन अपने को प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगाना, फॉर एग्जांपल इफ समबडी हैड द शॉप ड्यूरिंग कोविड टाइम और उसे लोन की फैसिलिटी मिल जाती है, तो हो सकता है कि दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैन स्टार्ट द माइक्रो वेंचर. माइक्रो वेंचर मींस बहुत छोटे से लेवल पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है. सिमिलरली इंश्योरेंस फैसिलिटी, अगर आपको बेसिक प्रोडक्ट मिलता है, बेसिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज नोन एज इंश्योरेंस, और आप उस इंश्योरेंस में अगर कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन है, हेल्थ क्राइसिस आ जाता है कि आप
कि कंडीशन ऐसी, यू आर जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन, बट अगर आपको यहाँ पर इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, यू विल बिकम बीपीएल। आप पॉवर्टी लाइन के तो ऊपर है बट नॉट वेरी हाई, यू आर नॉट रिच, यू आर नॉट मिडिल क्लास, और आप सिक होते हो कोविड के टाइम पर, बट आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट यू विल बिकम और यू विल बी द पुअर पर्सन बिकॉज यू विल शिफ्ट बिलो द पॉवर्टी लाइन, क्योंकि आप काम नहीं कर पाओगे, काम नहीं करोगे, यू विल बी अर्निंग एनीथिंग। बट इस ऐसी सिचुएशन इफ यू हैव द इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कैसे हेल्प करेगा, इंश्योरेंस हेल्प ऐसा करेगा कि आपको पॉवर्टी की लाइन में नीचे नहीं रखेगा, अल्टीमेटली यू विल बी मेंटली सेटिस्फाइड, और आपके अपने जो रिसोर्सेज हैं वो खर्च नहीं होंगे। इसमें प्रधानमंत्री का बीमा योजना इज वेरी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, particularly in the case of health sector. Similarly, pension. So ultimately, pension is what कि जब आप 60 plus years के हो गए, you are getting something to spend. अगर इमेजिन करिए पेंशन जैसा आइडिया नहीं है और आपके पास सेविंग्स भी नहीं है, आप इन्वेस्ट भी नहीं करते, आपको रिटर्न भी नहीं आता, सो इन दैट सिचुएशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपके पास एक देयर इज अ वेरी बेसिक ट्रबल कि आपके पास डायरेक्टली अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। आइदर यू विल टेक द लोन, अगर लोन लोगे भी तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ के पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। सो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका सर्वाइवल विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। कि ओवरऑल इंडिविजुअल के लिए तो डिफिकल्ट है, इसके साथ साथ इट इज इम्पैक्टिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कंजम्पशन। कंजम्पशन इज डिक्लाइनिंग। कोई भी अगर डिमांड है, बेसिकली डिमांड क्यों होती है, अगर आपको इमेजिन करिए आप मार्केट से गेहूं खरीद के लाते हैं, यू बाय सम व्हीट, व्हाई वुड यू गो फॉर दैट, बिकॉज यू हैव द डिमांड टू कंज्यूम व्हीट। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो केवल वो आपकी डिमांड जो है वो वांट होगी, एक्चुअल डिमांड नहीं होगी, क्योंकि एक्चुअल डिमांड होने के लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए। पेंशन आपको वो पैसे देती है जिसकी वजह से आपकी जो वांट है, जो नीड है आपकी, वो डिमांड में कन्वर्ट होती है, और उस डिमांड से आप कंजम्पशन करते हो, और कंजम्पशन से क्या होता है, प्रोड्यूसर के पास पैसा पहुंचता है, फिर प्रोड्यूसर और इंसेंटिवाइज होता है, सो इकोनॉमी ग्रोथ मोबिलाइज होती है। दैट इज हाउ यू talk about these aspects in case of economic growth, and ultimately you will conclude with the aspect of inclusive growth and the poverty. All right, having seen this, let's move to the next question. ये बहुत simple और direct question again, 150 words, 10 marker. So keyword is PDS. Now directive is what are the major challenges. Further, directive is how. Next part, we can make it effective and transparent. So in the introduction, we can briefly talk about PDS, how PDS has evolved. Basically, PDS is nothing. PDS simply means the public distribution system, जिसमें गवर्नमेंट cheaper rate पर और almost free rate पर लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट करती है. So it is a tool for food security. It is a tool for food security in India. So targeted हुआ 1997 में, ये अंत्योदय अन्न योजना 2000 में, एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आया जिसमें हमने फूड प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया इन 2007, एंड लीगली इट बिकेम मैंडेटेड इन 2013 बाय नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस। तो मेन बॉडी में पहला पार्ट होगा चैलेंजेस। जब चैलेंजेस की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है यहाँ पर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर। मतलब आपने पीडीएस में स्टार्टिंग से एक प्रॉब्लम थी कि आप दोज हु डिड नॉट वांट द पीडीएस, और जिनको जरूरत नहीं थी, they were included in the list, रेशन कार्ड में उनका नाम आता था और उनको फ्री राशन और सस्ता राशन मिलता था, सब्सिडाइज। पर जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, जिनके पास में जो एक्चुअल में पुअर थे, उनका नाम रेशन कार्ड में नहीं था, तो they were excluded। और इंक्लूडेड कौन होते थे, जिनको जरूरत नहीं थी। नॉट ओनली दिस, देयर वर घोस्ट बेनिफिशियरीज आल्सो। घोस्ट बेनिफिशियरीज मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करते बट फिर भी एक घर में कई नाम है, तो उनके लिए ज्यादा राशन मिलता था। फर्दर चैलेंज है, एक सेम क्रॉप सबको मिलती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 3 डिफरेंट क्रॉप्स आर लिस्टेड और वही 3 क्रॉप सबको मिलती है। नेक्स्ट चैलेंज इज इन्फ्लेशन। पूरे कंट्री भर में जब आपका कुछ क्रॉप है, लेट्स से व्हीट, राइस, यही 2 क्रॉप के ऊपर अगर फोकस है आपका, तो क्या होता है पूरे कंट्री में जब भी बात आती है, क्योंकि पीडीएस में क्या होता है, केस ऑफ पीडीएस गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ एफसीआई फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करती है फ्रॉम फार्मर से प्रोक्योर करके एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है स्टेट गवर्नमेंट को, एंड स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू फेयर प्राइस शॉप से लोगों तक ही जाता है। दैट इज हाउ पीडीएस वर्क्स। तो पीडीएस से फेयर प्राइस शॉप तक जाता है। ऐसे में क्या होता है, फार्मर्स भी उसी क्रॉप को प्रमोट करते हैं जो क्रॉप गवर्नमेंट डिमांड करती है, एफसीआई के थ्रू प्रोक्योर करती है, और उन क्रॉप की इन जनरल, क्योंकि नंबर 1
जब उन क्रॉप की डिमांड गवर्नमेंट की तरफ से फुलफिल की जा सकती है, गवर्नमेंट उन्हें खरीद सकती है, तो बाय डिफॉल्ट उनका मार्केट का प्राइस इंक्रीज कर जाता है. इट विल क्रिएट फूड इन्फ्लेशन इन द मार्केट. नंबर 1. नंबर 2, ये पैसे तो इट इज लाइक ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ द पीपल अंडर इट्स एम्बेट, तो पुअर लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत थी. बट यहाँ पर एक परेशानी है कि अगर एक्सक्लूजन में आपका नाम पीडीएस स्कीम के अंदर नहीं आता है, तो आपको बाहर जो ग्रेन्स मिलेंगे दे विल बी कंपैरेटिवली कॉस्टलियर. तो यहाँ पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट ऐसे दिखाई पड़ेगा. फर्दर, करप्शन एंड पिल्फरेज, मतलब बीच से राशन गायब हो जाना या फिर फेयर प्राइस शॉप से आपको कम राशन मिलना, दीज आर द पार्ट ऑफ नॉर्मल प्रैक्टिसेस, जो कि काफी लंबे टाइम तक जिन्होंने पीडीएस को डिफिकल्ट बना के रखा. डाइट डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो इग्नोर्ड. पीडीएस इज बेसिकली फोकसिंग अपॉन द कैलोरीज, कि आपकी एनर्जी बस और सर्वाइवल मेंटेन हो जाए, बट आपकी न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट है वो पीडीएस फुलफिल नहीं करता. फर्दर आगे देखते हैं कि अगर इतनी सारी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है. सोल्यूशन हो सकता है ग्रेडेड प्राइसिंग. इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर को रिमूव करना इज नॉट वेरी इजी. तो क्या करा जा सकता है कि दोस्त पुअर एट द बॉटम 20%, मतलब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो सबसे पुअर है 20% जितने लोग हैं, उनको चीपेस्ट रेट पर मिले. बट उनके ऊपर जो है वो कैसे मिले, उनको मिले कंपैरेटिवली हायर कॉस्ट पर. ऐसा नहीं हो कि पर केजी आप 2 रुपए 3 रुपए इतना चार्ज कर रहे हैं. केवल जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उनको आप कम दाम पर दे, बाकी सबको आप कॉस्टली दे. इवन अंत्योदय को फ्री में देना पड़े तो दैट इज कंप्लीटली फाइन विद इट. ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने भी रीइटरेट करा है. फर्दर देयर इज अनदर आइडिया कि आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर की परेशानी बार बार होती है. सो गवर्नमेंट मस्ट फोकस अपॉन द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, SECC, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, टू एलिमिनेट द इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर. एक बहुत डिटेल्ड सेंसस है जिसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट सारे दोबारा से सर्वे कराकर एक पर्टिकुलर आइडिया लगा सकती है हु इज एक्चुअली अंडर बीपीएल एंड हु इज अंत्योदय. तो उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चल सकता है. तो 2011 के बेसिस पर वी हैव गॉट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. नाउ इट इज अ टाइम टू अपग्रेड द सर्वे. तो सर्वे को अपग्रेड करना चाहिए रीसेंट. तो 2020 के आसपास के डेटा के साथ वी कैन improve and upgrade this survey. Further, hill and remote location पर गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है पीटीएस को, बट इसको इस नेटवर्क को और भी रिमोट लोकेशन तक पहुंचाना चाहिए ताकि कवरेज में इंक्लूजन हो. एक्सक्लूजन मस्ट बिकम द रेयरिटी. Further, it must also conclude the PDS must also include the aspect of climate change. So how it can include क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप को भी इन्वॉल्व कर दे, क्योंकि पीडीएस जिन क्रॉप्स को प्रमोट करता है वो क्रॉप्स बेसिकली आर वाटर गजलर. चाहे अगर शुगर की बात है या फिर व्हीट, राइस, तो दीज आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ वाटर. तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप को भी यूज कर सकते हैं. सो कोर्स ग्रेन लाइक मिलेट्स को भी प्रमोट कर सकते हैं पीडीएस के थ्रू. फर्दर एक सोल्यूशन जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, इट इज वन नेशन वन रेशन कार्ड. सो पहले क्या होता था, हर स्टेट का अलग अलग रेशन कार्ड होता, तो अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो आपको वहाँ फैसिलिटी नहीं मिलेगी. बट नाउ इट द प्रॉब्लम हैज बीन रिजॉल्व्ड बाय वन नेशन वन रेशन कार्ड. ऑल द स्टेट्स हैव टू अप्लाई दिस स्कीम. टेक्नोलॉजी कैन आल्सो प्रोवाइड द सोल्यूशन बाय प्रोवाइडिंग ऑटोमेशन टू द सिस्टम. जीपीएस ट्रैकिंग हो जाए ताकि पिल्फरेज के इश्यूज कम हो जाए, एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी चॉइस को धीरे धीरे इंडक्ट कर सकती है कंज्यूमर्स के एंड पर. सो विद दिस यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन. अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है आप इसमें कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बेसिकली इट इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना है. इन दिस इंडस्ट्री, फॉर दिस इंडस्ट्री वी हैव टू टॉक अबाउट टू थिंग्स. नंबर 1 द स्कोप, नंबर 2 द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. कितने वर्ड्स में, केवल आपको 10 मार्क्स के अंदर यानी 150 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना है. सो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन में वी कैन डू विद व्हाट इज एफपीआई. एफपीआई इज अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री व्हिच इज एडिंग वैल्यू टू agricultural produce. So adding value to agricultural produce by chemical or physical means. And here you can give some particular data. For this I'll suggest you there is one website IBEF. तो वहां से आप अपने डेटा को अपग्रेड कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज. तो आप IBEF पे जाकर भी वहां के इनके ग्राफिक्स को आप यूज करके
you can use their data in your examination जब आपके पास टाइम आता है तो. So यहाँ पर आप फूड प्रोसेसिंग को डिफाइन करेंगे एंड इन जनरल उसके बारे में आप करंट डेटा से यू कैन इंट्रोड्यूस योर आंसर. फर्दर नाउ देयर इज अ केस ऑफ स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया. स्कोप का मतलब है कि इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहाँ कैसे वैलिड हो सकती है. बेसिकली इट सिंपली मीन्स दैट कि कैसे इंडिया के पास फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड इनपुट आएगा और कहाँ पर इसका आउटपुट जा सकता है एंड कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा प्रोवाइड कर सकती है. तो बेसिकली इंडिया इज अ ज्योग्राफिकली diverse country, so we have got diversity, geographic diversity, different soil types. So different soil types मतलब different crops can be grown, different agroclimatic zones. तो अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन की अलग अलग क्रॉप होती है. जैसे कहीं पर प्लांटेशन क्रॉप है, कहीं पर टी कॉफी हो सकती है हिली एरिया में, स्लोपी एरिया में, तो वहीं पर आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप, फ्लोरिकल्चर एक्सेट्रा बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कल्टीवेट किए जा सकते हैं. वी हैव गॉट वास्ट ट्रैक्ट ऑफ एलुवियल रेंज. तो एलुवियल प्लेन्स में we can grow n number of crops. Similarly, aquatic resources इंडिया के पास plenty है, like fresh water, aquatic resources as well as marine water. Vast coastline इंडिया के पास में, तो दोनों ही तरफ से इंडिया को क्या फैसिलिटी मिलती है. इंडिया has the tendency and potential to go for these different resources. Further, अगर स्कोप की बात करते हैं तो within scope India has a demand. Demand means India has a market both domestic as well as overseas. Overseas means export related. डोमेस्टिक मार्केट कैसा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का. अगर हम स्कोप के सेंस में बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन इन इंडिया बेसिकली इज इंक्रीजिंग. तो बाय डिफॉल्ट अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो इट मींस देयर आर एसोसिएटेड फैक्टर्स जिसकी वजह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी. नंबर 2, अर्बनाइजेशन के साथ साथ न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है. तो डाइटरी हैबिट में क्या होगा कि न्यूक्लियर फैमिलीज आते हैं, तो जॉइंट फैमिली ना होने की वजह से देयर आर लेस नंबर ऑफ पीपल and more number of work they have to do. तो उनके लिए काम चाहिए प्रोसेस थोड़ा इजी होना. So packaged food and the food with a longer shelf life is essential. Similarly, people are having rising income. So अगर इनकम राइज कर रही है तो they have more money to spend over the food. However, उनका proportion क्या होगा, कम हो जाएगा. तो अगर उनके पास ज्यादा पैसा है तो वो instead of directly investing into the fresh thing, they can also go for the production of food processing industry. Further, organized retail sector ये भी इवॉल्व हो रहा है. Along with this, ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर मींस जैसे रिलायंस फ्रेश का आना या डिफरेंट हाइपर मार्केट्स का आना एक पॉजिटिव सिग्नल है. इसके साथ साथ ई कॉमर्स, लाइक डिफरेंट ग्रोसरीज आर गिवन. फॉर एग्जांपल डिफरेंट ग्रोसरीज की अगर बात करते हैं तो आपका ब्लिंकिट, ग्रोफर्स एक्सेट्रा, लीशियस, तो आपके डिफरेंट ई कॉमर्स साइट्स हैं जो आपको ग्रोसरीज प्लस फूड प्रोसेसिंग आइटम्स को आपके पास तक पहुंचाती हैं. Apart from that, corporate sector जो इनको प्रोड्यूस करता है, they are also increasing, like Lay's etc. They are becoming big giants. Not only this, there is an opportunity for the smaller sector MSME to produce more. Now, another factor is changing lifestyle and dietary habits. People are more focusing upon the protein-rich diet and organic crops. So chemical को avoid करना चाहते हैं and they are becoming healthier in their outlook. Further, export orientation. So India has identified several export locations. So foreign markets are also there, which require or which demand for Indian input. For example, Indian honey and tea has a very important destination in the Central Asian countries. Now, having talked about the scope, अब आपके पास थोड़ा सा पार्ट है सिग्निफिकेंस को डिस्कस करने के लिए. अगर आप सिग्निफिकेंस की बात करेंगे so you can talk about the jobs, how many jobs it can create. Jobs are increasing in food processing. Another significance, migration will reduce, so rural to urban, tier 2 to tier 1, all similar migration can be reduced. Why? Because food processing industry can be related in proximity to the, can be like installed, can be applied or set up in proximity to a farm location. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि रूरल यूथ को बाहर ही जाना पड़े, रूरल यूथ अपने शहर में ही एडजस्ट कर सकता है. सिमिलरली फिस्कल डेफिसिट विल रिड्यूस क्योंकि हम ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होंगे इंपोर्ट के ऊपर, प्लस मोर इकोनॉमिक ग्रोथ इज जनरेटिंग. तो इसकी वजह से देयर इज द पॉसिबिलिटी कि हमारे पास फूड जो डिमांड है वो विद इन द कंट्री कैन बी फुलफिल्ड.
Inflation can be controlled. Inflation management कैसे होगा? Because sometimes if we do not have the longer shelf life, तो जो perishable items है उनकी कॉस्ट एस्केलेट हो जाती है इन दो सीजन्स जहां पर उनका प्रोडक्शन नहीं है, और बाय डिफॉल्ट जिनकी सप्लाई कम है तो कॉस्ट बढ़ती है, तो वहां पर इन्फ्लेशन आ जाती है। तो अगर मार्केट में भी फ्लक्चुएशन है तो उसकी कॉस्ट को बैलेंस किया जा सकता है इस इंडस्ट्री से। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब लोगों तक वी कैन प्रोवाइड द बेटर क्वालिटी फूड जो प्रोसेस्ड है, जिसकी शेल्फ लाइफ लंबी है। सिमिलरली क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एस्पेक्ट्स कैन बी हैंडल्ड। अगर फूड प्रोसेसिंग में हम ऐसे फूड को प्रमोट करते हैं जो कि क्लाइमेट स्मार्ट है तो भी होगा। फर्दर अगर हम फूड प्रोसेसिंग से शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, वेस्टेज कम करते हैं, तो इसका मतलब हमें ज्यादा सेम अमाउंट ऑफ फूड में हम ज्यादा लंबे टाइम पे ज्यादा लोगों तक वो फूड पहुंचा सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर पेरिशेबल वाला आपका अप्लाई होगा। लाइक नेक्स्ट इज द सिग्निफिकेंस विद रिस्पेक्ट टू जियोपॉलिटिकल शॉक। रिसेंटली वी कैन सी द वॉर बिटवीन रशिया and Ukraine. So Russia-Ukraine war, what is happening? There are so many food products and global food supply chain उसमें disruption हो रहा है। तो अगर वो shocks हैं तो food के prices भी increase करते हैं। So this point can also be further related with the aspect of inflation. These are the major points अगर आप economy के lens से देखोगे, then these are the major points which are making food processing industry as a significant factor. इसके अलावा there are several points जो आप और add कर सकते हो। For example कि आपके प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर तक जो ट्रांसफर है जिसके थ्रू होता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के थ्रू। अगर आप इसको रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्लस कुछ स्कीम्स का नाम ऐड करके इस आंसर को आप कंक्लूड कर सकते हो। सो विद दिस वी आर डन विद द 4 क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली दिस क्वेश्चन इज हैविंग समवhat tinge of more of economic aspects. So let's just first read this and try to discuss what is there. So it is about life expectancy and newer health challenges. Basically, what are those challenges and what steps need to be taken to meet them? Again, it is 150 words and 10 mark question. आपको इतने में करना है। This question is basically related to inclusive growth. So not exactly related to the economic aspect of our paper, but yes, some of the key factors can be taken from the economy itself. So those pointers I will discuss here, and then आप इसमें अदर पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो फ्रॉम द वेरिड नॉलेज। तो आप इसमें सोसाइटी को भी इन्वॉल्व करके लिख सकते हो। सो टू स्टार्ट विद द पॉपुलेशन एस्पेक्ट, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो कोई भी इंडिविजुअल कितने साल तक जीता है, उसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ है, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इंडिया की अराउंड 70 ईयर्स है अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। डेवलप्ड कंट्रीज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 प्लस तक होती है। इन सम ऑफ द कंट्रीज, हेल्दी कंट्रीज, इट इज 84 प्लस। So, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है तो क्या क्या नए चैलेंजेस आते हैं, एक बार देखते हैं। चैलेंजेस बेसिकली डिफरेंट होंगे। चैलेंजेस इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो फोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर इज हेल्थ रिलेटेड। तो हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस आपके पास बहुत सारे मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू साइंस इंडेक्स वी विल बी एडिंग, बट इसके साथ सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस पे तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर एल्डरली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो इट मींस डिपेंडेंस इज आल्सो इंक्रीजिंग। So the dependent population is 0 to 14 years and then 62 till the end of the life. This is the population which is dependent. So basically उनको क्या चाहिए, उनको dependent population को they need source to sustain. So pension, which actually putting burden on the government expenditure, exchequer, that is a problem. Further, feminization of agriculture is also related to this problem, like life expectancy के साथ में। Apart from this, एक opportunity आती है जेरियाट्रिक, अगर problems हैं health related तो जेरियाट्रिक केयर भी इसमें इंक्रीज होगी। Similarly, हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा फैक्टर है जो यहाँ पर इट इज बिकमिंग इम्पॉर्टेंट। एंड इंडिया के केस की अगर बात करें तो लेस देन ओनली 1% ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन दे हैव द इंश्योरेंस कवरेज। डिजीज बर्डन इज आल्सो इंक्रीजिंग, सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बेसिकली वो 60% ऑफ दैट कॉज करती है। बेसिकली दीज आर द डिजीजेस लाइक व्हिच आर रिलेटेड टू हार्ट, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। So ऐसी diseases these are increasing. So there are several health challenges, but आपके इस आंसर में आप जब scientific aspect देखें तो it is recommended कि आप इसमें उन points के बारे में बात करें which are related to socio-economic perspective. That is why I have included this answer in the economic discussion also.
फर्दर आप कुछ इसके बारे में सजेशन भी देंगे, लाइक व्हाट स्टेप्स टू बी टेकन, लाइक जीरियाट्रिक फार्माकोथेरेपी, आप ट्रेंड स्टाफ को भी इंक्रीज कर सकते हैं, एनजीओ जैसे हेल्पेज इंडिया इसको भी प्रमोट कर सकते हैं, प्लस देयर आर सेवरल गवर्नमेंट स्कीम्स जो पेंशन रिलेटेड है, अर्बन हेल्थ केयर, एल्डरली हेल्थ केयर रिलेटेड है, उनके बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पर. That must be taken care into the answer. All right. Now let's move to the next question. That is question number 11th, and it is of 250 words and 15 marker. This is the weightage of this question. So in this, we have to talk about economic growth of the recent past has been led by increase in labor productivity. एक statement दिया, इस statement को explain करना है. So this is the directive word. Another thing, that the growth pattern that will lead to the creation of more jobs without compromising labor productivity that we have to discuss here. So let me simplify. ये क्वेश्चन आपको भी हो सकता है देखने में पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल लगे. इनका सिर्फ इतना सा कहना है कि अभी तक की जो हमारी जॉब है वो लेबर प्रोडक्टिविटी को तो इंक्रीज करिए, इंक्रीज करा है उसमें, बट टेक्निकली देयर आर चैलेंजेस एसोसिएटेड विद दैट. तो हमें उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक्सपेंड करना है. दूसरा ये कि ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम ग्रोथ के पैटर्न को इंक्रीज करें, यानी ग्रोथ को इंक्रीज करें, और ग्रोथ हमारी ऐसी हो कि जॉब्स तो क्रिएट हो पर लेबर प्रोडक्टिविटी कम ना हो. तो इस आइडिया में आपके लिए जरूरी है पहले आप समझना कि व्हाट इज लेबर प्रोडक्टिविटी. पहले मैं आपको लेबर प्रोडक्टिविटी बताता हूँ, उसके बाद में वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, फिर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. बेसिकली लेबर प्रोडक्टिविटी सिंपली मींस दैट इट इज द रेशियो ऑफ जीडीपी अपॉन द टोटल वर्किंग आवर्स. सो बाय डिफॉल्ट what must happen? Labor productivity, if we want to increase the labor productivity, two things must happen. GDP must increase, number one. Number two, for each increase in total working hours, more GDP must be increased. Number two, these are the two factors. So here labor productivity is directly proportional to GDP, so GDP has to increase. Labor productivity is inversely proportional to working hours, so working hours has to reduce. This is the particular idea about labor productivity. Now when we know that this has to reduce, this means working hour, and GDP has to increase. Now we can bring in the discussion in the form of structure of the answer. Structure में क्या है? In the first part, in the introduction, discuss about the growth. So 1991 के रिफॉर्म से growth के बारे में बात करिए, and then tell that there is jobless growth. Jobless growth means very little jobs have been added. Even though growth is jobless, but GDP is increasing. So what does it mean? It simply means that the GDP is increasing, labor productivity is high. That is why GDP is increasing. Are you getting what I'm trying to say? So here what is happening? Because basically service sector was involved. So IT and BPO related services, they were increasing. So they have higher contribution to GDP, but they have low employment elasticity. Low employment elasticity means they provide less job with each increment in the GDP. तो अगर उनकी वजह से GDP इंक्रीज होती भी है तो इंक्रीज होने के साथ साथ जॉब ज्यादा नहीं होती. अगर जॉब ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है? सेम वर्कर इज परफॉर्मिंग मोर फॉर द जीडीपी, तो उस वर्कर की तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है. सो द लेबर प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग क्योंकि जीडीपी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, बट जॉब्स आर नॉट इंक्रीजिंग. क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर, सर्विस बेस्ड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है. नंबर वन. नंबर टू, इंडिया में इस टाइम पर एफडीआई आनी शुरू हुई 1991 के बाद से. तो मेन बॉडी का पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ. बेसिकली एफडीआई आई तो एक्सपर्टीज आई इंडिया में, प्राइवेट मैनेजमेंट आया, एक्सपर्टीज आई, इकोनॉमी ऑफ स्केल आई, प्रोडक्शन के स्केल इंक्रीज हुआ. जिससे पहले गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन था, अभी प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगा. प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो डिमांड क्रिएट हुई, जॉब्स बढ़ी तो फर्दर डिमांड क्रिएट हुई, एंड फर्दर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होने लगी. इंडस्ट्रीज अपने आसपास आने लगी, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्लस्टर बना लिया, दे केम टुगेदर एंड फॉर्म द क्लस्टर. फर्दर मशीन्स व्हिच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी फर्दर, दे बिकम द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो पहले जहाँ पर टूल्स नहीं थे, अभी थोड़े एडवांस टूल्स आने लगे. सो ये टूल्स ऐसे नहीं थे जिन्होंने मैन को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया, इंस्टेड दे इंक्रीज द इफेक्टिविटी ऑफ मैन. जैसे कि कई कुछ जगह पर कैलकुलेटर की जगह वी हैड द कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से स्पीड प्रोसेस इंप्रूव हो गए. और अगर रीसेंट केस की बात करें तो इन 2020, सो आफ्टर 2020 कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम
में भी जो हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी है इट हैज इंक्रीज। रीजन क्या है? आप घर पर बैठे हो, इंस्टेड ऑफ डूइंग ओनली 8 आवर्स शिफ्ट आप घर पर हो सकता है 8 आवर्स से ज्यादा का काम करो, आप 10 या 11 आवर्स का काम करो, दैट मे बी पॉसिबिलिटी। तो इससे क्या हुआ? लेबर प्रोडक्टिविटी इन द रीसेंट पास्ट हैज इंक्रीज। तो अगर बात करते हैं तो लार्जली सिंस 1991 द लेबर प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग विद सम फ्लक्चुएशन, और पिछले 2020 से लेबर प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ी है, बट उसका रीजन एक अलग है, दैट इज ड्यू टू द वर्क फ्रॉम होम। इस बारे में बात करने के बाद आपके पास एक पॉइंट बचता है जिसके बारे में आप बात करेंगे, दैट इज द ग्रोथ पैटर्न विद मोर जॉब्स, जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है, एंड हायर लेबर प्रोडक्टिविटी। अदरवाइज क्या है? अगर देयर आर सेक्टर्स जहां पर आपकी जॉब्स ज्यादा है बट प्रोडक्टिविटी कम है, इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है एग्रीकल्चर सेक्टर, जहां पर आपका डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? जो प्रोडक्टिविटी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक वर्कर की, दैट इज जीरो, मतलब उसके आने से कोई भी जीडीपी या आउटपुट में इंप्रूवमेंट नहीं होता। पहले भी अगर आप एक फील्ड से 100 किलो राइस पैदा कर रहे थे, तो आफ्टर द एडिशन ऑफ दैट एक्स्ट्रा वर्कर तो भी 100 किलो ही रहेगा। दिस इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ऐसी जॉब्स तो इंक्रीज हो सकती है कि आपको लगे कि आप जॉब कर रहे हो, बट उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो अब वी हैव टू गिव द सजेशन सो दैट ग्रोथ पैटर्न ऐसा हो दैट देयर इज जॉब एज वेल एज प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले कैपिटल इंटेंसिव वर्सेस लेबर इंटेंसिव की डिबेट में पढ़ना पड़ेगा। सो कैपिटल इंटेंसिव मतलब जो ज्यादा कैपिटल को इंक्लूड करती है, मतलब मशीन इसमें ज्यादा हो। लेबर इंटेंसिव मतलब जो ज्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है। तो अगर हम कैपिटल और लेबर इंटेंसिव सेक्टर में मशीन के साथ साथ, मतलब मशीन को अपग्रेड करें, प्लस टेक्सटाइल एंड लेदर सेक्टर में बोथ मशीन प्लस लेबर, अगर हम इन दोनों की कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, देन व्हाट वी कैन डू, we can increase jobs as well as labor productivity. Similarly, MSME में there are बहुत सारे sectors जो कि which can provide contribute highest to the GDP. MSME अभी भी 40% of the industrial output को देता है, plus roughly 40% ही export को देता है। अगर हम MSME का orientation और export oriented करते हैं, so we'll be having growth with jobs and higher productivity. Sectors like jute, bamboo and coir, इनमें भी आपके पास क्या पोटेंशियल है? जॉब्स के साथ साथ आपका लेबर प्रोडक्टिविटी का पोटेंशियल है। अगर गवर्नमेंट सिमिलर वे में इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? दोज वर्कर्स हु आर देयर, दे आर हैव बीन मोबिलाइजिंग द ग्रोथ, तो वहां पर डिमांड क्रिएट होती है और उन वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करती है। एक जगह मनरेगा में काम कर रहे हैं, एक जगह इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। एंड दिस ट्रांजिशन इंक्रीजेस द लेबर प्रोडक्टिविटी अलॉन्ग विद द जॉब आल्सो। सिमिलरली एग्रीकल्चर ट्रांजिशन मॉडल मींस प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में आना एंड देन सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर में जाना। सो एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग से आपका सर्विसेज में, ये होना चाहिए। तो इस पे अगर हम ध्यान देते हैं कि हम इंडिया के केस में हम सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ पर कम ध्यान दिया था, अगर हम इस पे ध्यान देते हैं बाय इन्वॉल्विंग दीज सेक्टर्स लाइक लेबर इंटेंसिव सेक्टर, तो क्या करेंगे? एग्रीकल्चर ट्रांजिशन मॉडल को सही से यूज करेंगे। फर्दर आगे आने वाली टेक्नोलॉजी लाइक रोबोटिक्स एंड एआई को हम इस तरीके से यूज करते हैं दैट वी आर हेल्पिंग मैन, उनको रिप्लेस नहीं कर रहे बट वी आर प्रोवाइडिंग मोर एवेन्यूज। तो हम क्या करेंगे? वी आर क्रिएटिंग अनदर पूल ऑफ जॉब्स जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर के लिए रहेगा, जैसे रिपेयरिंग हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर की बात भी हो सकती है। तो वी कैन गो फॉर द सॉफ्टवेयर आल्सो। इन द सिमिलर मैनर केयर इकोनॉमी लाइक नर्सिंग सेक्टर और द डोमेस्टिक सेगमेंट और द केयर इकोनॉमी जो अनरजिस्टर्ड होती है, that must be registered, number 1. Number 2, जब इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और एल्डरली पॉपुलेशन विल इंक्रीज, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? विल नीड केयर प्रोफेशनल्स। सो इस एसेंस में क्या है? द ग्रोथ पैटर्न इंडिया का जॉब भी क्रिएट करेगा और हायर प्रोडक्टिविटी भी क्रिएट करेगा। दैट इज व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट to this. In the conclusion, you can talk about some schemes, या फिर आप schemes को यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, and conclusion में आप sustainable development goals को डाल सकते हैं यहाँ पर भी। Moving ahead to the next question, what are the main bottlenecks in upstream and downstream process of marketing of agriculture product? तो simple, ये question भी simple है। Basically, it is about the agriculture marketing.
तो आपको इसमें 2 सेक्टर्स अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के बारे में बताना चाहिए। रेस्ट यू कैन डिस्कस। बेसिकली एक सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट है। सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है दैट देयर इज इनपुट, इनपुट से कनेक्ट होता है प्रोसेस, प्रोसेस से कनेक्ट होता है आउटपुट, आउटपुट से कनेक्ट होता है इसका मूवमेंट, एंड मूवमेंट से कनेक्ट होता है कंजम्पशन। सो फ्रॉम मूवमेंट वी कनेक्ट द कंजम्पशन। सो ये किसका सेगमेंट है? बेसिकली दिस इज द एंटायर मूवमेंट ऑफ एवरीथिंग इज नोन एज सप्लाई चेन। आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करें, चाहे एग्रीकल्चर या फिर नॉन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, तो सप्लाई चेन होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक कॉमन एग्जांपल है एप्पल फोन का। एप्पल फोन का डिजाइन जो कंस्ट्रक्शन है कहाँ होता है? इट इज देयर इन अमेरिका। डेवलपमेंट कहाँ होता है? चाइना में। कुछ पार्ट इसका ताइवान में, कुछ पार्ट कहीं और पर असेंबल होकर पर ये आपके पास पहुंचता है। So it is the supply chain of the product. Similarly, agriculture product की भी supply chain होती है। तो अगर आप बात करें एग्रीकल्चर फील्ड की, तो फील्ड पर जो इनपुट है, इनपुट ये किसका पार्ट है? अपस्ट्रीम। सप्लाई चेन की अपस्ट्रीम मतलब जैसे रिवर में अपस्ट्रीम होती है, इसी तरीके से अपस्ट्रीम, इसी तरीके से इसका डाउनस्ट्रीम वाला पार्ट है जब प्रोडक्शन हो चुका है, तो फील्ड से जब मार्केट की तरफ जाएगा, दैट इज डाउनस्ट्रीम। तो अगर अपस्ट्रीम सेक्टर की बात करें तो देयर आर इश्यूज लाइक फर्टिलाइजर। जैसे फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है, तो आपकी फर्टिलाइजर इज बेसिकली इंपोर्ट डिपेंडेंट, तो इंपोर्ट डिपेंडेंट है, प्लस फर्टिलाइजर की सब्सिडी एक इशू है। सिमिलरली सीड्स एक चैलेंज है दैट वी वांट गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स विद वाइगर एंड वाइटलिटी। क्वालिटी के साथ साथ सीड्स अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। अभी क्या है विद एमएनसीज वर्किंग इन द एग्रीकल्चर फील्ड, दे आर मेकिंग सीड्स टर्मिनल वेराइटी। टर्मिनल मीन्स जिन्हें आपने एक बार यूज करा और उसके बाद में आप उनको फिर वापस यूज नहीं कर सकते। तो सीड के ऊपर फार्मर्स के राइट दे आर रिड्यूसिंग, इसीलिए हमारे पास एक राइट भी है, प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स राइट एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट इंडिया में। तो ये किसके बारे में बात करता है? सीड के बारे में, सीड पे प्लस फार्मर के सीड रिलेटेड राइट्स के बारे में। इसी तरीके की कंट्रोवर्सी आपने देखी होगी, लेज एंड पोटैटो कंट्रोवर्सी, जो आपकी गुजरात में हुई थी। बेसिकली वो भी सीड से रिलेटेड राइट्स के ऊपर थी। फर्दर इनपुट साइड में, यानी कि अपस्ट्रीम साइड में आपके पास में पेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। लाइकवाइज क्लाइमेट चेंज एक चैलेंज पोज करता है इनपुट में, जो आपके प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर सकता है या फिर खराब भी कर सकता है। जब बात करते हैं डाउनस्ट्रीम की, तो वी हैव गॉट द मार्केट एरिया। तो एक तो होलसेल मार्केट हो सकता है, एक रिटेल हो सकता है, दोनों ही सेगमेंट में प्रॉब्लम है। और आपको पता है एग्रीकल्चर में एग्रेरियन डिस्ट्रेस का मेन कारण मार्केट है। एपीएमसी एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के बारे में आप यहाँ बता सकते हैं, उसके चैलेंजेस बता सकते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में बता सकते हैं, विच इज अ वेरी डिसेंट स्टेप, बट उसको फुली नॉर्मलाइज होने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया में भी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाई है, सो इट इज अ चैलेंज। लाइकवाइज अडल्ट्रेशन, जब मार्केट के पास तक हम जाते हैं तो प्रोडक्शन के बाद में अडल्ट्रेशन इज वन ऑफ द कॉमन फिनोमेना। फर्दर वैल्यू एडिशन की अगर बात करते हैं, तो फार्म का जो प्रोड्यूस है ये रॉ का रॉ आउट किया जाता है। वैल्यू एडिशन के इसमें कॉन्सेप्ट में देयर इज अ लैक्यूना, तो फार्मर्स का ध्यान वैल्यू एडिशन पे भी जाना चाहिए। इन दिस एसेंस जब वैल्यू एडिशन होगा, फूड प्रोसेसिंग होगी, और साथ में हमारे पास एक्सपोर्ट मार्केट को अगर हम एक्सप्लोर कर पाएंगे, वी बी हैविंग बेटर कंडीशन। एक और चीज है एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड, कि एग्रीकल्चर में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अगर हम प्रोसेस करते हैं आगे चल के, या फिर एग्री प्रोड्यूस में भी हम किस तरीके की कंडीशन में अपना प्रोड्यूस क्रिएट करते हैं, तो उसमें ग्लोबल अगर एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो देयर आर सेवरल मेजर्स लाइक सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, जिसके बेसिस में बहुत सारी कंट्रीज दूसरे कंट्री की क्रॉप को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर देती है। तो अगर ये हाइजीन मेंटेन की जाएगी, प्रैक्टिसेस बेटर रहेंगी, तो आपके मार्केट रिलेटेड जो डाउनस्ट्रीम इश्यूज है वो भी सॉल्व हो सकते हैं। इसमें क्या हेल्प कर सकता है? इसमें 13 सेवरल स्कीम्स लाइक मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लाइफ स्टॉक मार्केटिंग एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, संपदा स्कीम एटसेट्रा, देयर आर मेनी स्कीम्स, उनके बारे में लिख सकते हैं। हाउएवर आपके पास इस स्कीम को एलाबोरेट करने की जगह नहीं होगी, बट यू कैन राइट अबाउट देम टुवर्ड्स हियर। यू कैन कंक्लूड विद ऑप्टिमिस्टिक नोट कि ये चैलेंज कैसे रिजॉल्व हो सकता है। इसमें आप ई कॉमर्स की बात कर सकते हो कि कैसे ई कॉमर्स रिटेल सेक्टर में जा सकता है। एक आप और एस्पेक्ट को ऐड कर सकते हो, जैसे ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में भी आप यहाँ बात कर सकते हो कि रिटेल सेक्टर में फार्मर्स को बेटर प्राइसेस करने की बात करेगा। इसके साथ साथ आप फार्मर एसोसिएशन के बारे में भी यहाँ पर बात कर सकते हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के बारे में। So with this, you have plenty of the points to attempt this answer. Now let's move forward to the next question. This is the question important and the last question of our discussion, that is, what is integrated farming system and how it can help
the small and marginal farmers in our country. So to start with this idea, let me just give you a system. This is 15 marker question. So it will be roughly 55% of your answer, and 45% of your answer will be this second part. So two things you must know: what is integrated farming system? Another thing is who is small and marginal farmer. So basically anybody either who is landless or person who is having less than 2 hectares of land is in the category of small and marginal farmers. And in India, roughly 85% of the farming population is small and marginal farmer. What are the problems with small and marginal farmer? Basically, we need to see the problem is that they are living on subsistence level. Subsistence means whatever they grow, उसको consume कर लेते हैं, मार्केट में नहीं बेच पाते तो सरप्लस नहीं बचता. प्लस अगर उनको एक भी शॉक लगे, अगर कोई भी शॉक लगता है तो they become poor and incapable of doing the farming practice in the next season. तो हो सकता है अगले सीजन से वो किसी की फील्ड पर जाकर सिर्फ लेबर का काम करे. So what are they? They are small and marginal farmer. Now we have to talk about integrated farming system और इसका रिलेशन बताना है कि कैसे ये फार्मिंग कम्युनिटी के साथ हेल्प करेगी. तो इंट्रोडक्शन में आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में बता सकते हैं, एंड देन मेन बॉडी में इट हैज टू बी सिंपल दैट फीचर्स ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इट्स बेनिफिट्स अबाउट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम and how it can be useful for small and marginal farmer, and then you can conclude your answer. That is the structure. So let's try to see what are the things which we can talk about here. So basically integrated farming system is the approach which not only talk about the crops, it talks about diversification. So diversification include two types of diversification. One is crop diversification, another one is the activity diversification. Activity means not only crops, you just also go for allied sector. So basically mixed farming has to be there. So plant plus animals, that is one thing. Different types of crops, different types of plants must be there. Not only crops, we can also go for trees also. So crops plus trees plus we can have the exercise. पहले आपने एक ऐसी क्रॉप लगाई, फिर फर्दर नेक्स्ट राउंड में आपने दूसरी क्रॉप लगाई जो सॉइल में नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है. सो यू कैन प्रोवाइड द लेग्यूमिनस क्रॉप. सो देयर कैन बी अ साइक्लिक पैटर्न टू enrich crops. It can be done. So these are the factors which we can consider in case of crop activity. Allied sector के केस में we can talk about the livestock rearing plus इसी सेक्टर में हम आगे बहुत कुछ सोच सकते हैं. एक्वाकल्चर कैन बी इन्वॉल्व, वर्मीकल्चर कैन बी इन्वॉल्व. सो देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज जो डाइवर्सिफिकेशन के साथ इंटीग्रेट होंगी. यहाँ पर कहने का कुल मतलब इतना सा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में that there is this farm and this farm must be involved in all the activities. So activity A, activity B must be such that waste of activity A is the input of activity B. Similarly, waste of activity B is the input of activity A. Let's say here we talk about crops. Crops आपने हार्वेस्ट करने के बाद मार्केट में क्रॉप गई, कुछ आपने कंज्यूम की, कुछ मार्केट में गई. Now what is going to happen? Whatever is remaining, जो क्रॉप का रेसिड्यू है, ये जो वेस्ट था, ये क्या बना? ये आपके लाइफ स्टॉक के लिए फीड बना, राइट? लाइफ स्टॉक के लिए फीड बना. फर्दर लाइफ स्टॉक का जो वेस्ट था, इसको आपने कंपोस्ट किया, मैन्योर बना, और मैन्योर कहाँ पहुंचा? आपके फील्ड में. इसी के साथ साथ आपके कुछ प्रिंसिपल्स जैसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को भी आप यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हो. सो मेन एम क्या है कि आप वेस्ट एंड इनपुट की साइकिल में अपने आप को एंगेज करते हो. सो इन टोटलिटी आपका जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर रिड्यूस होता है. दैट इज टू से ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस होती है. किस केस में? इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम. इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज नॉट ओनली अबाउट क्रॉप्स एंड एनिमल्स, इट ऑल्सो गोज बियॉन्ड. जैसे आपने यहाँ पर देखा, वी टॉक अबाउट द फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा, जो कि आपकी फील्ड से ही ड्राइव होंगे. उसके लिए आपको अदर केमिकल इनपुट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिमिलरली यहाँ पर एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी है. एनर्जी बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी को और इंटीग्रेट किया जा सकता है, जैसे
आपके सोलर पावर प्लांट्स, सोलर पैनल्स कैन बी इंटीग्रेटेड हियर. सो बाय डिफॉल्ट अभी द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मीन्स जो आपके वेस्ट को आपको वेल्थ में कन्वर्ट करना है. सो इट इज अ मैकेनिज्म टू कन्वर्ट वेल्थ इनटू वेस्ट प्लस यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज जुडिशियसली. आपको वेस्ट नहीं करना. This is the component of integrated farming system. Now let's see. Waste recycling is the essential component that has to be considered in the system. There has to be a judicious mix of agriculture practices like dairy, poultry, piggery, etc. whatever. जो भी आपके एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है उसके बेसिस पर या जो भी इकोनॉमिक स्टेटस है उसके बेसिस पर. जैसे अगर कोई स्मॉल फार्मर है and that farmer can have goat along with small field of wheat. Agar farmer is located near the urban center, so what farmer can do? Farmer can have goat instead of wheat. Farmer can go for vegetables. These vegetables will provide the daily vegetable need of the urban centers. Similarly, farmer के पास अगर agroclimatic condition अच्छी है, तो instead of just going for vegetables, farmer can go for some area of floriculture. अगर farmer के पास risk की capacity ज़्यादा है, farmer can go for plantation crop, agroforestry को promote कर सकते हैं. Further, next step is self-reliance को improve कर सकते हैं, vermicompost etc. There are many methods जिसको आप integrated farming system में use कर सकते हो. So in totality, integrated farming system is not just a farming system जिसमें आप crop cultivation करो. Crop के साथ साथ you make the system comprehensive कि waste का कम हो, recycling process बढ़े और input and output इसके बीच में रिलेशनशिप ऐसा हो कि आप एक कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट आप जनरेट कर सको. दैट इज अबाउट द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम. अब इससे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को क्या हेल्प होगी? बाय डिफॉल्ट जैसे सबसे मेन पॉइंट है कॉस्ट विल बी लो. सो कॉस्ट ऑफ इनपुट विल बी लो. इट मींस प्रॉफिट विल बी हाई. नंबर 1. इट आल्सो मींस अगर आपकी प्रोडक्टिविटी, इफ यू आर एबल टू डू इंटेंस एक्टिविटी और आप अपने क्रॉप को और अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पा रहे हो, फील्ड की सॉइल की हेल्थ को अच्छे से रख पा रहे हो, देन योर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी विल आल्सो इंक्रीज. पुअर कंडीशन है, इफ देयर इज अ पुअर कंडीशन, फॉर एग्जांपल वैगरीज ऑफ मॉनसून, नहीं होती बारिश एंड यू आर लाइंग इन द रेनफेड रीजन, तो वहां पर क्या होता है? द अलाइड सेक्टर एक्ट्स एज अ इंश्योरेंस अगेंस्ट बैड वेदर. फिर इसके बाद में आपके पास लैंड के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा नहीं रहती. कम लैंड में भी यू कैन प्रोड्यूस मोर. That is how these are the major factors जहाँ पर आप efficiency, productivity, production, insurance, etc. farmer के लिए improve कर सकते हो by the incorporation of practice like integrated farming system. Alright, so with this you will also conclude this answer and then we move forward. These are just simple points which we have, like output will increase, so small size farm. Further, high value crops like horticulture crops can be introduced. Other products can be the output. Efficiency will also increase. Soil fertility and productivity will also increase because organic waste recycling will be there in the system. One more point, climate variability, adaptability can also increase. क्योंकि ये जो farming system है in which we are reducing the carbon footprint. We are reducing the carbon footprint. तो अगर carbon footprint establish करते हैं, reduce करते हैं, तो इसकी वजह से आपकी farming practice और भी ज़्यादा sustainable development होती है. That will help in the further development of agriculture of small and marginal farmers. All right, so with this we have concluded the discussion over these particular 8 questions on economy. Roughly 100 and 100 plus marks are from economy. Not only this, economy का पोर्शन आपका GS पेपर 1 में भी यूटिलाइज होता है. तो आई वुड सजेस्ट कि अभी इस साल का पेपर वाज कंपैरेटिवली इजी है, जिसमें एक क्वेश्चन केवल लेबर प्रोडक्टिविटी वाला विच वाज ऑन द ट्रिकियर साइड. अगर आपको वो थोड़ा सा समझ में आता है तो आपके पास उस पे लिखने के लिए कंटेंट काफी होता है. सो हियर व्हाट आई कैन सजेस्ट टू यू इज दैट just keep your focus on whatever you are doing. Keep your focus on revision. Keep your focus on issues like current affairs, and more importantly, try to keep your focus on the contemporary issues. For example, the jobless growth is a contemporary issue, asked again and again. Food security is a contemporary issue. Land reform is a contemporary issue. जो आपके पेपर में contemporary issues marked है, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए. Not only static and current के साथ साथ आप contemporary issues को भी ध्यान दीजिए. So with this, we wind up our discussion for today. Thank you very much.